Assalamu alaikum. So this was supposed to be the recording of the live session that I took on the 23rd of the April, but for some reason the recording of the first half an hour or so was deleted for some, I don't know why. So what I'll be doing is I'll be covering the topics that I covered in that live session here. So which were these two topics: the Cartesian coordinates and then the equation of the line. And after that, the rest of the recording is still intact. So I'll just join the video at the after part of this. So that way, we'll be covering the whole topic, and we will be covering these three topics from that live session. So the recording would be of that live session, and after the covering of these all of these topics, we had covered some past paper questions as well, so they would be in this whole video as well. So this would be, I think, around 10-minute video, and then after that it would be the recording of the session. I'd write down at the top how many minutes after which the live session recording would be starting. Okay, so first of all, let's talk about what is a Cartesian coordinate, or what the Cartesian coordinates are, or rather what coordinate geometry is. Okay, now geometry we know is when we have shapes and figures, when we have shapes, figures, lines, and then we have the cube, like a three-dimensional shape. Okay, when we have all of these type of shapes, then this whole concept is called geometry. Okay, since this whole concept is called geometry, the coordinate geometry is rather simple. Simply speaking, coordinate geometry would be having all of these points, all of these shapes on some coordinates, on some Cartesian coordinate, on the Cartesian coordinate plane, or the space when it comes to three dimensions. But here we'll only be talking about the two dimensions of the Cartesian coordinates. So this is the Cartesian coordinate plane, rather a 2D graph. So it would be our y-axis, and this would be our x-axis. For the scope of O levels, we would only be discussing about the Cartesian coordinate plane and not the Cartesian coordinate space, which would be three-dimensional. So we would only be sticking to two dimensions with x and axis and the y-axis. Now, on this x and the y-axis, we have two number lines. Now, the first number line is of the x-axis, and the second number line is of the y-axis. Now, what exactly is a number line? Let's talk about that. So a number line is any line. Let's say we draw a line here. It expands from negative infinity. It expands from negative infinity to positive infinity, with its center being 0. So this would be called a number line. Okay, a number line that expands till infinity. Let's say there is a point here, 1. Now I'm talking about some properties of the number line. Number line is a defined thing, and so there is nothing much to really explain, rather we just need to define it. So here we have 2 points, 0 and 1. We know that between 0 and 1 there would be a point 0.5. Then if we go even further, between 0.5 and 1 we'll have another point, which would be 0.75. Okay, let me take the reduce this. Then between 0.5 and 0.25 we will have another point, which would be 0.625. Okay, and then between that we'll have another, then we'll have another, then we'll have another. What I'm trying to say is that when we talk about a Cartesian coordinate, we can see that between 2 points we have infinitely many points. Okay, and there would be no gap between 2 points when we talk about a number line. In the same sense, when we talk about in the Cartesian coordinate plane, or rather a two-dimensional Cartesian coordinate, okay, two-dimensional Cartesian coordinates, there would be no gap between 2 points, any 2 points that we can take, rather be on x-axis or on the y-axis or on the x and the y-axis combined. Like we will have infinitely many points here. Okay, there would be infinitely many points here. Now in the Cartesian coordinate, the first thing that the most important thing is a point, and then what would be the coordinates of that point.
Okay, let's say I take the point to be here. Okay, now in this point would have some coordinates. The coordinates of this point would be its placing or its position with respect to the origin, which is this. Okay, so with respect to the origin, we can see that it is 3 units on the x-axis and then 4 units on the y-axis. So its coordinates would be, let's say this is point P. So Px would be equal to 3 and then Py would be equal to 4. We write the coordinates of P as Px comes first, or the x coordinates of the point comes first, and then comes the y-axis, y coordinates of the point. So this is how we write the coordinates of P. Okay, in the same sense we can write the coordinates in on a straight line. We can write the coordinates of every single point present on the line in such a method, in such way. Now there is another thing that needs to be visualized. A line is made up of infinitely many coordinates or infinitely many points. Okay, like on the x-axis we can see that from negative infinity to positive infinity there are infinitely many points, but we can also see that between 2 points there are infinitely many points. If there are infinitely many points between 2 points on a line, then if we have any line we can say that there are infinitely many points on that line, and that the line is made up of infinitely many points. Okay, so this was just an overview of the Cartesian coordinates and more specifically Cartesian coordinate plane. Next, we need to discuss the what is actually meant by the equation of a line. Okay, and this is where the recording got corrupted or something, and the recording would start. So let's uh, write down the equation of a line. So the equation of a line is y is equals to mx plus c. Okay, so this is the equation of a line that we have, equation of a straight line rather, in which we can say is x, a function of x such that it gives y. So we can write y is equals to f of x. We'll talk about this function concept in some other video. You can just say that we put in the value of x to get the value of y from this equation. Okay, so there would be some value of x that we put here to get to the value of y, and this m is the gradient, and this c would be called y-intercept. This m is the gradient, and then this c would be called y-intercept of the equation, okay, or of the line. We'll talk more about y-intercept and gradient later on. Secondly, the main thing from here was what is meant by the equation of a line. So what is actually meant by the equation of a line is simple, that in this equation if we put in some value of x, we'll get the value of y. Secondly, if we have any coordinate that is on that line, then that coordinate must satisfy the equation here. Okay, so let's say this has x and y, then this x and y must satisfy this equation. Meaning, if we put in the value of y instead of y, and if we put in the value of x instead of x, we should get an equality. Okay, so I think from here on the recording would start, and good luck understanding that. Okay, so that would be our equation of a line, and what it means by the equation of a line is it's more or less a function where we put in the value of x to get the value of y being our function, x being our variable that is independent of everything, and y being our dependent variable since y is dependent on x. Okay, so let's move towards the gradient of a line now.
Let me erase out most of this coordinates from here. Hopefully you everyone understands what I have been talking about till now. Show me a raise of hands. Okay. Shayan, are you having any difficulties? Okay. Let's move towards the gradient of a line now. First of all, I would like to reiterate that if the session is lively, it would be fun for everyone. So you guys are allowed to unmute yourself to ask questions if you have any problems in between. And if I'm going in a flow, try to raise your hand and I'll ask the question from you. And you can ask the questions and please answer the questions by unmuting your mic as well. It's okay. Okay. Next, let's draw a line here. So I have drawn a simple straight line here. What I know about this line is that it is passing through the origin, okay, and then it is passing through this point, this point, this point, and all of these points. It's passing through all of these coordinates, okay. That is also one of the things that the equation of a line tells us, that if we put the value of x from the x-axis, we'll get the value of y from the y-axis, okay. Now the I've joined from my laptop, so even if I speak, you won't hear me. I could join. It's all right. Uh, you can just type in chat. I'll read it. Okay, so let's move towards the gradient. Now, the gradient of a line, if I write down the meaning of gradient or the definition of gradient, I would say for this topic specifically, I changed the definition of gradient a little bit so that it suits this topic. So gradient, the definition of gradient is the movement on the y-axis for one unit moved on the x-axis. Okay, the movement on the y-axis for one unit moved on the x-axis. That would be the gradient of a line when it comes to this topic specifically. The more defined definition for gradient is the change in y-axis for the change in x-axis, and we'll move towards that. For now, just think of it as that. The next thing is we see how many units are we moving for one unit moved on the x-axis as the definition tells us. You'll see that in mathematics, most of the things are quite literal. Whatever we write down, whatever the definition tells us, that is what the whole topic really talks about. So if we see the gradient of this line, it would be for the one unit moved on the x-axis, let's say from 1 to 2, that is the movement of one unit. And then how many units have we moved? We have moved one unit on the y-axis for that one unit moved on the x-axis. Okay. Similarly, if I'm going to draw a line without the scale, since that takes a lot of time.
Similarly, if I draw a line that goes from -2 to, let's say, 1, from this point to this point, and then it moves so and so. Think of it as a straight line. Rather, I'll use the scale since it would eliminate all the confusion. Let me know if any of the colors that I'm using is confusing for you or is not visible. Okay, so we can see this green line now, and let's say I'll take the coordinates for the green line from here. So what we need to do is we need to see how many units we have moved on the y-axis for 1 unit moved on the x-axis. So for the 1 unit movement, we have from -4 to -3, that is 1 unit moved on the x-axis. Then for the same case, we have moved from left to right. We have moved from -5 to, -1 to -0.5. So what this tells us is that we have moved 0.5 units on the y-axis for 1 unit moved on the x-axis. So the gradient of this line would be, 0.5. Is that understood? Okay. Murtaza, is that understood? Tapi आप वापस से रिपीट करेंगे मैं समझ नहीं आया ओके, ग्रेडियंट की डेफिनेशन हमने क्या लिखी हुई है? द मूवमेंट ऑन द वाई एक्सिस फॉर 1 unit मूव्ड ऑन द एक्स एक्सिस, दैट्स ग्रेडियंट. ठीक है. If I talk about the gradient for this line, the green line, if I take the point of this and this point, okay, since I can see the movement on the x-axis for this point is from -4 to -3, that would make the movement of 1 unit. Since we have moved from -4 to -3, and such movement is of 1 unit. Yes, it is easier with the formula. I will discuss the formula next, but I wanted to give a definition of the gradient as well so that it is understood with the concept of what gradient actually is. So it is 1 unit. Here we have moved, and then we have, for that 1 unit, we have moved 0.5 units on the y-axis. Is that understood, Murtaza? Yes sir. Okay. So that would be our gradient for this line. Okay. Now let's define a definition. Let's write down a formula for the gradient as well. Okay. The formula for the gradient is given by G is equals to rise over run, or rather change in y-axis, change in y over change in x. Okay, so it is given by rise over run or change in y over change in x. So let's see, let's take 2 points from this line. Let's take this point and let's take this point now. Okay, for these 2 points we have the coordinates -4 comma -1, and then for the second point we have the coordinates -2 comma 0. Okay, and then by the formula we can see that the G would be equal to change in y
over change in x. Now the change, we can write down the change. We write down the change is equals to second unit, second point minus first point, or second value minus first value. In this case, the second value would be the value that is on towards the right. Okay, let's wait for Faizal to win. Okay. So for the formula for the gradient is change in y over change in x, or rise over run. The reason it is rise over run is the change in y-axis is called rise, and then the change in the x-axis is called run. As we can see, we are running horizontally, and then for the y-axis the change would be a vertical rise, which is going up or down, in the other case of going down, or rather I like to call it change in y over change in x. So in this case, if we take these 2 points, this would be our point 1 and this would be our point 2. We can see the change as the second point, the value of the second point minus the value of the first point. So change in x, or rather I would write delta x. Delta talks about the change. The delta is the symbol for the change. So सर ट्रायंगल का symbol है ना? triangle का symbol है, but it is also the symbol of change. Okay. The change in x would be equal to the second point minus the first point. Second point would be -2, and then we would be subtracting -4 from here. Minus and minus, it would be plus, and this would be 2. Then the change in y would be equal to second point would be 0 minus -1, so it would be 0 minus -1. This would be 1. So we can see that the g is 1 over 2, which would be 0.5. So we can get gradient easily by using the formula, which is change in y over change in x. Let's write that down. तो हटाया ऐसे ही होता है कि y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो ज्यादा इजी रहेगा ना? हाँ, मैं उसी जगह पे लेके जाने वाला था. It is delta y over delta x. What we have seen here is y2 जो है हमारे पास, जो सेकंड पॉइंट का y है, that would be our y2, and then जो फर्स्ट पॉइंट का हमारा y है, that would be y1. ठीक है, and y2 minus y1 would give us the change in the y-axis, rather the units we have moved on the y-axis. And then secondly, the change in the x-axis would be x2 minus x1, moving from x1 to x2, giving us change x2 to x1. So it would become y2 minus y1 over x2 minus x1. This would give us the gradient. Next, let's move towards, let me erase it. I'll erase a lot of it. Well, since it has been removed, let's draw the line again. Okay. Now let's move towards what was the next thing that we needed to discuss? The length and midpoint of a line, or a line, or a line segment. Okay. So let me draw a line here. Let's just say this is 1, this is 2, this is 3. 1, 2, 3. -1, -2, and then -3. -1,
-2 and then -3. Please give me a minute. Okay, sorry about that. So as we can see, this is the graph. I'll not be writing down the other coordinates. It takes the time. So let's take 2 points and then let's see what's the distance between 2 points and what it means by the distance between 2 points. So let's say this is our point 1 and this is our point 2. Point 1 and point 2. We can see we are not moving on the y-axis here. We are only moving on the x-axis here. So in this case, we can directly write down the distance between these 2 points as the units we have moved from point 1 to point 2. We can see we have moved 1 unit and then 2 units. So the distance between point 2 comma point 1 would be equal to 2. Okay. The same can be seen when we move on the y-axis. Let's take this point and then this point. The distance between these 2 points would be 1, 2, 3, and 4. Let's take this q1 and this is q2. Distance between q2, q1 is equals to 4 in this case. The problem arrives when we move towards the movement, when the movement happens in both axes at the same time. Let's see what happens then in that case. Okay. Let's say that the points that we have are, one point we have here and the other point we have here. Okay. So these are the 2 points. Up till now, everything is clear. Yes, sir. Okay. Let's take these 2 points. Let's name it P1. Let's name it P2. So how would we find the distance between 2 points which are diagonal, which are not moving in only the x-axis or only the y-axis? But in this case, we need to see what kind of a figure we have here. We can see that we have a rather right angle triangle here. Okay, right angle triangle here with its B or the base being the movement on the x-axis, movement of x, and then its height being height, or rather I would call it perpendicular, or P, or let's say per, okay, PER is equal to movement on the y-axis. Now we can find out the movement on the y-axis and the movement on the x-axis. The movement on the y-axis would be 1, 2, 3, and 4. 4, and then the movement on the x-axis would be 1, 2. Wait a minute. Okay, let's scrap that a little. I drew the figure wrong. Sorry. Okay, let's take this to be our P2. We would still have a right angle triangle. Okay. In the case of B, the base being the movement on the x-axis, which is equals to, in this case, 1, 2, and 3. So it would be 3 units, and then the perpendicular, or rather the movement
on the y-axis is equals to 4. 1, 2, 3, and 4. Now we can see this is a right angle triangle. How many of you have up till now learned about Pythagoras theorem? Give me a show of hands. Murtaza, have you learned about the Pythagoras theorem? Yes, Okay. ninth class. Okay. So Pythagoras theorem जो होता है वो हमें ये कह रहा होता है कि if we have a right angle triangle, this would be our hypotenuse for the right angle triangle. Let me draw the right angle triangle here. So if we have a right angle triangle, this would be our base, this would be our perpendicular, and this would be our hypotenuse. We can see that h square would be equal to p square plus b square. Okay. Hypotenuse squared would be equal to perpendicular squared plus base squared. So in this case, we have base as 3 and then the perpendicular as 4. So we can write down h squared to be equal to 4 squared plus 3 squared. How many of you know about the concept of square? Hopefully, Murtaza, you also know about the concept of square. Oh, sir. नहीं पता? No. Okay, for the sake of time, I'll just say that the square is two values multiplying by each other. If we have 4 squared written, it would be 4 multiplied by 4. The reason behind it, let's go a little bit into it. The reason behind it is the area. What is the area of a square? The area of a square is its side multiplied by side. Okay, and from that we have came towards the square, since we have named it square. Since in this case we can see that if the square has the side of 4, the area of it would be 4 into 4, and that is the reason we call 4 to the power of 2 4 squared. So the 4 square would be equal to 4 into 4. In this case, it would be h square is equals to 4 squared, which would be 16, plus 3 squared, which would be 9. H squared would be equal to 25. Okay. And then h would be equal to under root 25, giving us h is equals to, now under root is the opposite of square, of taking the power as 2. The under root is reversing that. So if we have 4 squared is equals to 16, under root 16 would be equal to 4. So under root 25 is equals to 5. So we'll write down h is equals to 5 here. So in this case, we can see that this h right here is equals to 5. And since we had taken the distance for the base and then the distance for the perpendicular as well, the hypotenuse would also come out as a distance, and the distance is 5. Is that understood by everyone? Faisal, is that understood? Okay, you've written down a chat. Okay. So we have now seen what the distance between 2 points is. Now let's write down a formula for this. Okay. Let's remove all the working so that we get some area here.
Okay, so we can see that the movement of x is 3, but can I say that the movement is also equal to the change in x, delta x? Can I say this? Okay, I can say that the movement is also the change that happens for the x units of point 1 and point 2. And then the same can be said for the movement on the y-axis, that is the change of units of y, or rather the change in y-axis from point 1 to point 2. So I can say that m of x is equals to delta x, and then m of y is equals to delta y. Now, from this we can say v is delta x, and then p is equals to delta y, p being the perpendicular. If I write down the formula here, I can see h square would be equal to delta y squared plus delta x squared. H squared would be equal to delta y, as we know, is y2 minus y1, y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 squared, and then h would be equal to under root of it all, y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 squared. Up till now, everything is understood, hopefully. Yes, sir. Okay, so let's write down the formula here. So the formula is length is equals to under root, or rather, let's say under root delta y square plus delta x square, which is equals to under root y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 squared. Okay, this would be the formula for the length. Now we can use this formula for any 2 points on the Cartesian coordinates. The 2 points can be horizontal points, meaning that they connect a horizontal line. They can be vertical 2 points. Since in those cases we will have this. Let's say in the case of a vertical line, we'll have the change in x as 0. So 0 squared would be 0, and then we'll just have y squared under root y, and then we know that anything squared under root, these cancel out to get y. Okay, now let's move towards the midpoint of a line segment, or a midpoint between two lines. Okay, midpoint is much easier than the length. Okay, in the same way that I talked about the length, I'll talk about the midpoint as well. Let's say we have 2 points, one and then a point which is here, so it would be 4 and then 5. We can see literally that the midpoint between these 2 points would be right here, the middle of the 2 points, or the middle of the line from expanding from point 1 to point 2. So this would be our midpoint.
Okay. The same goes when we talk about the midpoint in the y-axis. So it would be, the midpoint would be right here, midpoint. The same applies for the midpoint when we talk about a line that moves on both axes, on y and on the x-axis both. So let's say we have a line that moves from here to here. Okay. Now the midpoint of this line, okay. So the midpoint of this line we can see is the point that is here. Since this is the half of the whole line, we can see this is the midpoint of the line. What are the differences? What we can see here is we have moved, let's say, on the x-axis 4 units, and then on the y-axis we have moved 2 units. To get to the midpoint, we are moving half of what we have moved on the x-axis and half of what we have moved on the y-axis. Okay. So if this is our delta x and this is our delta y, this would be delta x by 2, and this would be delta y by 2. Okay. Up till now understood? Yes. Okay. Since we can see the movement till the midpoint is half of the movement of the whole line, and to get to this point, which is P2, we have to move from P1 to P2. We have to move from P1 to P2, and we know that the points of P1 is 1 comma 1, P2 is P2 is in this case 5 comma 3. We can write down P2 as P2 is equals to P1 plus delta x comma delta y. Okay. And if we write it down as this, so it would be P2 would be equal to 1 comma 1 plus the change in the x-axis is 4, and then the change in the y-axis is 2. So it would be 4 comma 2, and P2 would be equal to 1 plus 4 comma 1 plus 2. We add coordinates in such a way that we only add the x coordinates and the y coordinates together, and we do not add the x and the y coordinates with each other. Okay. So this way we get P2 to be equal to 5 comma 3, which is the same. So we can see that we can get to P2 by adding the change into P1. Understood up till now? Murtaza, understood? Shayan? Yes. Okay. Since we have gone to the P2 this way, can we also get to the midpoint? Can I say that midpoint is equals to P1 plus delta x by 2 comma delta y by 2? Can I say this? Yes. Okay. Since that is how the movement is working, I can say this as well. So let's write it down and get to the value of the midpoint. So the midpoint would be equal to the points of P1, which is 1 comma 1 plus 4 by 2 comma 2 by 2, which would be 2 and then 1 here.
So the midpoint would be equal to 1 plus 2 comma 1 plus 1, which is equal to 3 comma 2. And we can see that the midpoint has the coordinates of 2 and 3. Okay, 3 and 2. So we have moved to midpoint using this method. So I would like to get to a formula so that I don't have to first calculate delta x and then delta y and then use the whole method. So I'll get to the formula by driving it a little, or rather doing some small algebraic manipulation to get to that formula. Yeah, midpoint is simply halfway from point 1 or point 2. It's halfway from the both points in the direction of the other point. Okay, so from P1 it would be halfway into the towards the direction of P2, and from P2 it would be halfway or the half of the movement towards P1. Okay, let's drive a formula for that. Okay, let's drive a formula, and the formula can be driven by using this formula right here. So I'll just use the space up here to drive it. So we can see that midpoint would be equal to the coordinates of point 1, which would be x1 comma y1, plus the change in the x1, the delta x over 2 and comma delta y over 2. So delta x over 2 would be equal to y2 minus, x2 minus x1 over 2 comma y2 minus y1 over 2. When we would add that, we would get to x1 minus x2, rather plus like x1. Let me write it out. Let's take it to the next page and write it there. Okay, we will be solving past paper questions after going through all the topics. We have reached until the midpoint. Next, we will talk about what this equation is. There's not much to really talk about here, and then we'll see what is the gradient of a perpendicular line and a parallel line, and after that we'll move towards past paper questions. Okay, here we Okay. can see that midpoint is this. If I write it down, I can say so. I can write it down as x1 plus the whole uh, frac fraction here, x2 minus x1 over 2 comma y1 plus y2 minus y1 over 2. Okay,
Next, I'll solve this fraction or simplify this fraction. So it would become 2x1 by taking the LCM here upon 2 plus x2 minus x1 comma 2 y1 plus y2 minus y1 over 2. We can just do this to get x1 plus x2 over 2 comma y1 plus y2 over 2. So this would be our formula towards getting midpoint. So let's write this formula down as well. Midpoint is equal to x1 plus x2 over 2 comma y1 plus y2 over 2. Hopefully there is no confusion here. So, sir. Faiza, everything okay? Shayan? Shayan, yeah, are you having any confusions? No, sir. Okay. So let's move towards the equation of a line. So let me first draw a line here. Okay. Think of this as a straight line. I know it's not straight. So this line would have the equation y is equal to 2x plus 2. Okay. This line will have the equation of y is equals to 2x plus 2. The reason being, the equation of a line is y is equals to mx plus c. And as we discussed before, that in this case, m is the gradient of the line. And we can see that this line has the gradient of 2. This line has the gradient of 2 since the movement for 1 unit moved on the x-axis, we are moving 2 units on the y-axis. So the gradient would be 2. And then the c is called y-intercept. So it means the point at which the line intercepts the y-axis, which would be this point right here in this case. Okay, is that clear? Murtaza, Shayan? Yes, sir. Okay. Okay, we can see that y is equals to mx plus c, and what m means, what c means. Now let's see how we can get to the equation of a line. We can get to the equation of a line by seeing the line as we see here, that the y-intercept is 2, the point in which at which it is intercepting the y-axis, and then we can see that the gradient, we can find out the gradient by taking any 2 points on the line. I've taken these 2 points. This would be p1, this would be p2.
and P1, P2 and P1. By using P2 and P1, I can get the points, the gradient of the line. Okay. Now let's see if we can get to the equation of a line without seeing the y-intercept actually touching the y-axis. So let's say if I had a line that was just drawn up till here, how would I know what would be the y-intercept of such a line? Okay. So in this case, what we do is we need to find out first m, which would be our gradient, and then we need to take one point of such a line. So let me draw a line. This would be -4, this would be -5. Let's say the line starts from here, goes to here, it goes to here, which is 4. Okay, let's say I draw a line. I would like to draw this line as straight as possible. Okay, this is the straight line that we have here. Now in this case, I'll first need to find out the gradient. The gradient can be taken out by using this point and this point. I'll use these 2 points. So the gradient would be the change in the y-axis over the change in the x-axis. It's simply 3/1, making m is equals to 3. Okay, so we have m is equals to 3. Now, what if I use the formula for the gradient, which is y2 minus y1 over x2 minus x1, to get a formula to get to the value of c? Okay, do you think that is possible? सर तो हम लोग m की वैल्यू मतलब कि m जो निकाल रहे हैं वो थ्री का डाल देंगे, मतलब कि m जो 3 है वो m का डाल देंगे, तो y जस्ट 3x प्लस t हो जाएगा। और अगर हम y बस तो पता है हमें, तो बस t तो निकल जाएगा फिर। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। तो हम m की वैल्यू जो है वो 3, वो मतलब कि 3 जो डालेंगे वो m का डाल देंगे ना। हम्म, इधर m के अंदर हम लोग 3 डाल देंगे। हो गया। ठीक है, इधर m के अंदर हम लोग 3 डाल देंगे और साथ ही साथ में हम लोग कोई सा भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे। लेट्स से ये वाला मैं पॉइंट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स इधर आ गए, x कोऑर्डिनेट्स इधर आ गए, और फिर इसको इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, हमारे पास c आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इन दिस केस let's use these points. So let's use this point. In this case, this point has the coordinates -5, comma -2, -5 and -2. So it would be -2 is equals to m, which is 3, and the x coordinates are -5 plus c. When we manipulate this equation, we will get -2 is equals to c minus 15. Now to take this 15 to the other side, we will be adding 15 to both sides. So it would become -2 plus 15 is equals to c minus 15 plus 15. 15 and 15 would cancel out to give us c is equals to 13. Okay. So the equation of this line would be y is equals to 3x plus 13. Is that understood by everyone? Oh, okay. यस सर। Okay. Now we have another equation that gives us the equation of a line. Okay. Let's talk about that equation a little bit. So that equation is derived from m is equals to y1, sorry, y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay. Now, when we have an equation like this, what we do is we just remove, let's say, 2 and 2 here, and we say that
y and x can be any 2 points of the line. They're not some specific point. When we talk about the specific point, we give them a numbering. So what we are seeing is that they can be any two points of the whole line, and we do not know the values of those 2 points. What we know the values are of y1 and x1, and we know the value of m. Okay. So in this case, we would get 3 is equals to y minus y1. Let's use this point as our y1, as our p1. So rather, so this would become -2. So it would be -2 over x minus -5. So this would get us 3 is equals to y plus 2 over x plus 5. Now to take this x plus 5 to the other side, we'll multiply both sides with x plus 5. When we multiply both sides with x plus 5, we would get 3x plus 5 is equals to y plus 2 over x plus 5 multiplied by x plus 5. This x plus 5 and this x plus 5 would cancel out to give us 3x plus 15 is equals to y plus 2. If we take this 2 to the other side by subtracting 2 from both sides, what we get is y is y plus 2 minus 2 is equals to 3x plus 15 minus 2. So this would cancel out to give us y is equals to 3x plus 15. So as we can see that we get the same, 3x plus 13. So as we can see, we get the same equation by using this method or by using the other method that we used before. Okay. तो हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, y को छोड़ देते, y जस्ट टू m की वैल्यू m के अंदर डालते, x प्लस और 13 c के अंदर. मतलब किस जगह पे? मतलब कि जैसे कि हमने y और x से एक तो मतलब कि एक तो जो हमने कोऑर्डिनेट निकालते वो तो हम लगा दिए थे ना, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि y इज इक्वल टू m की वैल्यू जो आई 3, y जस्ट 3 x और c के अंदर 30, वो याद है ना इस तरीके से. हाँ, मतलब वो मैं असल में दो डिफरेंट मेथड से मैं इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल रहा था. पहले वाला वो मेथड था, उसके अंदर हमने m डाल के हमने इस वाली इक्वेशन को यूज करके c की वैल्यू निकाली थी उसमें. ठीक है. अभी जो है मैं एक इक्वेशन बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और हमारे पास सिर्फ ग्रेडियंट गिवन है, तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन तक कैसे पहुंचेंगे विदाउट फर्स्ट गेटिंग सी एंड देन फिर उसके बाद हम लोग रीराइट करें इक्वेशन को. ठीक है. ओके. Okay. So as we can see, we have used these methods here. Let's drive a general formula to get to the equation of a line. Get directly to the equation of a line without solving anything. Okay. So what we get here is m is equals to y minus y1 over x minus x1. We will be multiplying both sides with x minus x1. X minus x1 is equals to y minus y1 over x minus x1. From here on out, I would not be multiplying both sides and subtracting from both sides, adding from both sides. I'll directly be moving the values to the other side. Okay. So this has moved here. In this case, it would become, so we can see that it is mx minus mx1. I would write it, keep on writing it this way because multiplying m with both x and then x1 and then it becomes kind of tedious and a lot of values get written that way.
Then we can just switch the places of both of these sides. Left hand side becomes right hand side, right hand side becomes left hand side. So it would be y minus y1 is equals to m x minus x1, y is equals to m x minus x1 plus y1. We can directly use this method to get to the equation of a line. Now, can someone tell me what would C be equal to in this case? Y. Y1. Okay, Faiza. Sir, Y1. Okay, फैजा का भी मैं आंसर सुनना चाहता हूँ. Can you hear me, Faiza? Hello, Faiza. Can you hear me? Okay. Did you understand everything that we have done up till now, Faiza? Okay. Can you find out the value of C from this equation right here? Okay. So y1 is actually not the value of C here. It gets confusing a little bit here. The thing is, C would be equal to, if we expand this equation, we would get y is equals to mx minus mx1 plus y1. Now, if we compare this equation, let's say this is equation 1, and then this equation, we call this equation 2, what we can see is mx and mx is here, and then C is equal to all of this. So C would be equal to minus mx1 plus y1. Okay. Yes, sir. Is that okay, Faiza? Where would m1 cancel out with m1? No, it would not cancel out. The reason being, it is x1 and it is x. Okay. The difference between x1 and x is x1 is a specific point and x is a general point, which can be any point of the line. Okay. So the C becomes this. So the two equations that we have derived from here, let's write those both down here, are y is equals to m x minus x1 plus y1. This is equation of a line. Equation of a line. And then the second that we have gotten is C is equals to minus m x1 plus y1. This is our y intercept.
This is our y intercept. Okay. Now we have the last topic for the today's session, which is parallel and perpendicular lines. After we have covered this parallel and perpendicular lines, we'll move towards the past papers and we'll do a few questions from the past papers. Okay. So let's remove it all. Okay, let's talk about the parallel lines next. Let's say we have a line, a horizontal line from here to here, and then another horizontal line from here to here. What do you think the gradient of both of these lines would be? Same. And what would be the value of that? Murtaza? I can't hear you. 0. Yeah, 0. It would be 0 since there is no change in the y-axis. So it would be 0 over anything, and let's say 0 over 1 or 0 over 2. It's all equal to 0. Okay. So in Okay. such cases, the equation of such a line becomes directly y is equals to the value, which would be 2. Since the equation of the line would be y is equals to mx plus c. Can you mute yourself, Abdullah? Oh, sorry, Murtaza. Yeah. So the equation of the line would be y is equals to mx plus c. M, since m is 0, it would be 0x plus the y-intercept, which is 2. Y is equals to 2. Okay. And then I'll talk about the vertical line as well. The equation of a vertical line, we just write it down as x is equals to whatever the number might be in the x-axis. The reason we do not talk about the y points is that in this case, the gradient m would become infinity, since it would become the m would be equal to the change in y over change in x. We know that the change in x for this case would be equal to 0, and it would become delta y over 0, which is sometimes written as infinity. Sometimes we say it is undefined. Okay. So that is why we do not write it down in the values of y. We just write it down as x is equals to the value. So let's move towards the parallel lines. We can see that two lines being parallel have the same gradient when they are horizontal lines, or when they are vertical lines, we can see the same thing. What would happen if I talk about two lines that are parallel but move diagonally? Let's say this line. Okay. And then we have the second line as this line. Okay. We have these two lines. What can I say about the gradient of these two lines? Abdullah, sorry, Murtaza. हाँ, वो तो सही है, सेम होगा, लेकिन इसके ग्रेडियंट 0 तो नहीं होगा. जीरो नहीं होगा, इनका ग्रेडियंट जीरो नहीं होगा. इन दोनों लाइंस का ग्रेडियंट कोई वैल्यू होगी, एंड द वैल्यू वुड बी सेम. The reason the value would be same, we can see that the rise and the वो run है. is equals to the rise and the run for the both of the lines. Okay, तो इस वजह से Okay. ये सेम हो जाएगा.
इस केस में हमें ज्यादा इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो डीपर कॉन्सेप्ट रादर आ जाता है ना, वो अब आ जाता है हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस का। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, लेट से एक ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन वुड बी अ लाइन दैट इज with 90 degrees from it, that goes away in the 90 degrees. So in this case, the gradient of the horizontal line m is equals to 0, and the gradient m is equals to infinity. Okay. 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 Since we can see this is the case. Now, what if I draw a line, let's say a line which has the gradient of let's say I draw this line, and then I also draw this line. We do not write infinity gradient as 0. We cannot write the gradient of infinity as anything. Like we, even if there is a gradient of m is equals to infinity, we don't write it down anywhere. Okay, we cannot write it down as 0 or any number rather, since infinity is not equal to any number. So we usually avoid it, and if we have to write it, we just say m is equals to infinity, or we say it is undefined. Undefined Okay. would be a better representation of such gradients. Okay. Okay, let's talk about the gradient of these two lines. Okay, and before we talk about the gradient of these two lines, let's see if these two lines are perpendicular to each other. Okay, I guess this protector doesn't work that way. Okay, can I say that these two lines are perpendicular to each other? Since I can see here that these two lines are perpendicular to each other. फिर आपने सर्कल क्यों बनाया? ये सर्कल नहीं है, rather एक प्रोटेक्टर इसको समझ लो है, ठीक है। ओके, ये एक डबल साइडेड प्रोटेक्टर है, ठीक है, एक साइड इसकी, हाँ अब आ गया ना, सही है सही है सही है। सो लेट से मैं यहां से स्टार्ट होता हूं और यहां तक, ये हमारे पास आ गया 90 डिग्रीज, ठीक है। ओके, since I can see that this is 90 degrees, so I will remove this and I'll also remove the protector as well. So I can see this is the 90 degrees. In such case, what is the gradient of this line which I'm labeling as line 1, and what is the gradient of this line? Faiza, try to send the answer in the private chat instead of everyone in meeting. Murtaza, you tell me as well. No, what I want right now is that it would be m1. The gradient of line 1 would be
m1, and what would that be, and then m2, what would that be, the value of m1 and m2. Murtaza, Faiza. What would be the value of m1 and m2? Can you hear me, Murtaza? Okay, I think Murtaza might have been disconnected. Faiza, what would be the value of m1? Okay, I'll directly find the value of m1. It would be 1 unit moved on the x-axis and 1 unit moved on the y-axis. It would be 1 over 1. So m1 would be 1 if we find out this way. And then for the m2, what we can see is for the 1 unit moved on the x-axis, we are moving -1 unit on the y-axis. It would be -1. Okay. Now, in the same sense, if I draw, सर yes, Murtaza, आप वापस रिपीट करेंगे, मुझे ज़्यादा बहुत समझ नहीं आया कौन सा वाला पार्ट? कि ग्रेटर आउट निकालना वाला किस तरह निकालना है एम अच्छा, वन कैसा है 1 तो ये इस तरीके से आया ना, सीधा सीधा मैंने देख लिया। 1 unit एक्स एक्सिस में हुआ है, ये देख लो। 1 unit एक्स एक्सिस में मूव हुआ और 1 unit वाई एक्सिस में मूव हुआ। So it would be 1 over 1. This would be 1 over 1, which is equals to 1. In this case, it is -1 upon 1. So it would be -1. ओके Okay? सर Okay, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये दो ग्रेडियंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग ये तो खैर हमने इन दो ग्रेडियंट्स को देख लिया। इन दो ग्रेडियंट्स के अंदर हमें थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है कि दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, द ग्रेडियंट वुड बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। मतलब अभी तक हमने ये चीज एक देखी है, अभी हम कंक्लूजन कोई ड्रॉ नहीं कर रहे। लेट्स से नेक्स्ट मैं जो है लाइन बना देता हूं। जो नेक्स्ट मैं लाइन बनाता हूं वो मैं बनाता हूं कुछ ऐसी। अच्छा, मुझे एक बात बता देना, कोई और आप क्या कहते हैं, किसी ने कमिटमेंट तो नहीं की हुई थी इस टाइम पे, क्योंकि 3 बज चुके हैं और 3 बजे तक का सेशन था ये वैसे। नहीं ओके, मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर ही, नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर अंदर इस पूरे सेशन को रैप अप कर लूं, जिसके अंदर पास पेपर क्वेश्चंस भी हो जाएं। ठीक है, अब टॉपिक सिर्फ ये परपेंडिकुलर लाइन का रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ओके तो ये अब हमारे पास आ जाएगी एक अदद लाइन। ठीक है, नाउ अब मैं जो हूँ एक दूसरी परपेंडिकुलर लाइन बनाना चाहूंगा। ठीक है ना, एक ये लाइन हो गई है। सेकंड लाइन जो मैं ड्रॉ करने लगा हूँ वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ से जा रही है वो मेरे पास यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, और फिर अब सेकंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ फॉर दीज पॉइंट्स। उसके लिए मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो विजुअली प्लीजिंग थोड़ा सा हो जाए। अच्छा, ये लाइंस जो मैंने ड्रॉ की है ना, ये मैंने पॉइंट्स के थ्रू ड्रॉ की हैं।
Okay. So these are the two lines that we have, and we can see that these two lines are perpendicular to each other. Hopefully दोनों को graphs draw तो करने आते होंगे ना, if you get the points and the coordinates. यस Straight, सर। like points के अंदर straight line एक हमने draw कर ली, ठीक है, और एक टेबल अगर हमारे पास let's say given है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास values of x होंगी and then हमें values of y find करनी होंगी, यस ठीक है, यस और सर। उन पॉइंट्स को हम लोगों ने प्लॉट कर दिया और प्लॉट करने के बाद हमने निकाल दिया। ठीक हो गया, क्योंकि उस चीज को मैंने कवर नहीं किया था तो उस चीज में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि तो इधर से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस के अगर हम लोग ग्रेडियंट्स की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के ग्रेडियंट्स को हम लोग देख लेते हैं क्या बन रहे हैं। इस वाले लाइन का ग्रेडियंट एल, लेट से इसको मैं अब L3 कह देता हूँ, और इस लाइन को मैं कह देता हूँ L4, ठीक है। L3 का ग्रेडियंट वुड बी लेकिन M3। एलजी की क्या चीज? वो ये तो फिर M1 होगा ना, ये M1 होगा, चले M2 होगा। नहीं नहीं, अभी हम लोग M1 M2 नहीं कर रहे, अभी मैं नंबरिंग ही टोटली डिफरेंट कर दिया मैंने। M1 और ओके। M2 मैंने अलग से लिखे हुए हैं कुछ। L3 क्या हो जाएगा अब इस केस में, ये बताना मुझे जरा, जिस तरीके से हम लोग लाइन का ग्रेडियंट निकालते हैं उस तरीके से। फायजा मुर्तजा, M3 और M4 की मुझे जरा वैल्यूज बताना। ओके। मुर्तजा, निकल गई M3 और M2 की वैल्यूज? ओ के, जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी ना M3 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे एक यूनिट हमने मूव कर दिया, वाई एक्सिस पे कितने यूनिट्स मूव हुए हैं ये हम लोग देख लेंगे। फॉर वन यूनिट मूव्ड ऑन द एक्स एक्सिस, हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव मूव्ड ऑन द वाई एक्सिस, 1 and 2, तो simply M3 would be equal to 2. Without using any formulas I can quickly find out the gradient, ठीक है। In the same sense for the for the M4, मैंने 1 यूनिट मूव किया एक्स एक्सिस पे, मैंने देखा कि वाई एक्सिस में मैं कितने यूनिट्स मूव किया हूँ। इस केस में वाई एक्सिस पे एक और दो यूनिट्स, मतलब सॉरी एक और दो यूनिट्स कह रहा हूँ, सॉरी, एक्स एक्सिस में मैंने एक यूनिट मूव किया, तो वाई एक्सिस पे मैंने हाफ यूनिट मूव कर दिया, ठीक है। और हाफ भी नहीं, मैंने नेगेटिव हाफ यूनिट मूव किया वाई एक्सिस पे, ठीक है। सर नेगेटिव नीचे की तरफ तो नहीं है ना, वो तो ऊपर की तरफ है बाय। नहीं, नेगेटिव इस वजह से क्योंकि हम लोग जब भी किसी इसको ग्रेडियंट को कैलकुलेट करेंगे या डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे ना, रादर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे लाइन के ऊपर। जब लाइन तो पे हम सर लोग लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो फिर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सो इट बिकम -0.5/1, -0.5 एज आर ग्रेडियंट।
or rather -1/2. Okay. Okay, sir. Okay. So in this case, what we can see is m3 is equals to this and m4 is equals to -1/2. इस केस में भी हमें ये चीज दिख रही है कि जो दोनों ग्रेडियंट्स हैं परपेंडिकुलर लाइंस के वो नेगेटिव ऑफ ईच अदर हैं, लेकिन एक और चीज हमें दिखी है इसमें से कि दे आर आल्सो परपेंडिकुलर, दे आर आल्सो रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ओके, सो m1 is equals to m4 is equals to what we can see from here is -1/m3. ठीक है, making it m4 multiplied by m3 is equals to 1 -1. We have just taken this to the other side. Okay, now I can write down instead of m4 and m1, I can just write it as m1 dot m2, m1 being the gradient of one line, m2 being the gradient of the line that is perpendicular to it, is equals to -1. Okay, there is actually a much deeper explanation to it. I would like to go into it, but it becomes quite challenging to explain and for the students to understand as well. Okay, I'll see if I can move towards it a little bit. Rather, avoid it. I'll avoid it for the betterment. ए लेवल्स में ये जो चीज़ होती है ना, थोड़ा सा क्योंकि चीज़ों के बारे में पता लग जाता है तो ए लेवल्स में जाके आसान हो जाता है समझाना, ओ लेवल्स में बहुत मुश्किल हो जाएगा समझ में आना भी और मेरे लिए समझाना भी. तो just think of it as the gradient of a perpendicular of two lines which are perpendicular. ठीक है, when we multiply the both gradients we get -1. So the last equation that we have from all of this is m1 dot m2 is equals to -1. I would write it down on the next page. So the gradient would be m1 dot m2 is equals to -1, where m1 is gradient of a line, m2 is gradient of line L1. In this case, let's write it as L1, and then m2 is gradient of a line perpendicular to L1. अब वो लाइन कोई सी भी हो सकती है, वो लाइन कहीं से भी गुजर सकती है L1 के. इट डज नॉट मैटर कि उसको इसी जगह से गुजरना चाहिए, वो लाइन यहाँ से भी गुजर सकती है. ठीक है, वो लाइन यहाँ से भी गुजर सकती है, कहीं से भी गुजरेगी. उसका जो ग्रेडियंट होगा वो L1 के या फिर L1 के मतलब वही होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ही होगा उसका. इज दिस अंडरस्टूड? सर तो हमने M3 M तो M4 का ही निकाला कि M3 M4 का ही तो -2 आ रहा है. हाँ, सेम चीज आ रही है क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, तो तो इस मतलब कि हम ये नहीं हम्म हम उसको लिखेंगे नहीं जैसे कि हमने M1 या M2 को लिखा था -1 लिखा था. तो हाँ, M m3 और m4 का. मतलब कि आठ नहीं लिखेंगे लेकिन -1. हाँ, वो चीज तो हमें दिख रही है ना, हमने यही बात की है ना कि m4.m3 इज इक्वल्स टू -1, इधर हम लोगों ने ये लिखा है ना, और इसको मैंने फिर क्या कहते हैं जनरलाइज करके कह दिया कि m1.m2 इज इक्वल्स टू -1. ओके. ओके,
Sir, we find m1 and for m2 we reciprocate it and change its sign in case of perpendicular right lines. Yes, ठीक है, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, हम लोग m1 निकालने के बाद हम लोग m2 जो होगा जो कि एक परपेंडिकुलर लाइन होगी टू द फर्स्ट लाइन, उसका हम लोग ग्रेडियंट निकालने के लिए हम लोग m1 को रेसिप्रोकेट कर देंगे, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे लेट्स क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास जनरली, अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन जो हमारे पास जनरली होते हैं एक लाइन हमें गिवन होगी, कहा जाएगा कि फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, वो वो वाली लाइन होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो कि उस लाइन के बीच में से गुजरे और परपेंडिकुलर टू दैट लाइन हो, ठीक है। उस केस में उस लाइन की इक्वेशन हमें निकालने का कह देते हैं, ठीक है। इन सच केसेस, ठीक है, हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द फॉर्मूला दैट वी हैव ड्राइव्ड। उसका ग्रेडियंट हमारे पास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए हमारे पास, x1 एंड y1, मीनिंग हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और ग्रेडियंट होना चाहिए। तो क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन के, तो उसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, और उसका पॉइंट जो P1 होगा वो हम लोग बाय जो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन है वो हम लोग मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन ले सकते हैं। ओके, ओके सर। फैजा यहाँ तक समझ में आ चुका है? फैजा, हाँ मैं ये कह रहा था कि हम लोग किस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन निकालते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन, सिंस वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है उसकी by definition perpendicular bisector is the line that cuts from the middle of a line, ठीक है, from the middle of a line and is perpendicular to it, ठीक है, it has to cut from the midpoint of that line। हाँ हम लोग मतलब अगर वो उस तरीके से बात करें तो मोर देन हाफ डिस्टेंस हम लोग निकाल के जो है हम लोग आर्क बना देते हैं, एक यहाँ पे आर्क बनाएंगे एक यहाँ पे आर्क बनाएंगे, फिर इस पॉइंट से भी हम लोग आर्क बनाएंगे, ठीक है, जहां पे दोनों मैच हो होंगे वहां से हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो मैं शायद मुझे ये चीज समझ में ना आई हो। मुर्तजा हेलो, जी सर। ये चीज शायद समझ में ना आई हो इस तरीके से इस करके, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो निकालते हैं इस तरीके से। सर लेकिन अगर जैसा बोले कि मिडिल लाइन में मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर मिडिल लाइन में है, तो अगर मिडिल लाइन में नहीं है, जैसे कि अगर थोड़ा हाफ वे आगे है। हाँ, तो वो बाइसेक्टर नहीं होगी, परपेंडिकुलर होगी, बाइसेक्टर नहीं होगी। अभी जो है ना, मैं खैर बात अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, फॉर नाउ लेट्स टॉक इन द सेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। when we talk about it in the sense of coordinate geometry, the perpendicular bisector of the line is a line that moves from the midpoint of the 2 points, ठीक है ना। Let's say this is P1 and this is P2, this would be our midpoint, then this line would be called perpendicular bisector, which L2 would be called perpendicular bisector to the line created by P1 and P2, ओके ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रीजन बीइंग इट इज परपेंडिकुलर एंड इट बाइसेक्ट्स और हाफ्स द लाइन दैट इज ड्रॉन फ्रॉम P1 टू P2, ओके ओके। तो यही हमारे पास बाइसेक्टर की भी डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की यही डेफिनेशन भी है हमारे पास। अब इसको हम लोग डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करते हैं, जिस तरीके से अभी फायजा ने मुझे बताया था वो जो था वो हमारे पास ज्योमेट्री में हम लोग ड्रॉ करते हैं उस तरीके से। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो उसमें हम लोग इसको ड्रॉ करने का हमारे पास जो तरीका है वो हम लोग ड्रॉ तो खैर हम लोग इस इधर भी उसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन इसकी इक्वेशन निकालने का जो हमारे पास तरीका है वो हम लोग सिंपली y इज इक्वल्स टू m x माइनस x1
प्लस y1 के अंदर हम लोग सिंपली मिड पॉइंट की वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है, सिंस मिड पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है, तो हम लोग मिड पॉइंट्स की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे और सेकेंडली हम लोग m डाल देंगे एंड m वुड बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द line which is P1 and P2. Okay. Okay, sir. Okay. Let's wait for Faiza. She'll be back in 2 minutes since we will be starting past paper questions now. Murtaza, जी सर। शायन तुम्हारे दोस्त था? जी या मेरे क्लासमेट है। हाँ, उसको भी बुला लेना क्योंकि उसने कहा था पास्ट पेपर क्वेश्चन उसने करने थे मेनली, मेरे ख्याल से। ओके। ओके फायदा, ये समझ में आ गया ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, हम लोग ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। अब इस इक्वेशन ऑफ ए लाइन के अंदर हम लोग m की वैल्यू डालेंगे और मिड पॉइंट की वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगी लाइन, ठीक है, वो बिल्कुल बीच में से मिड पॉइंट में से गुजरेगी, तो मिड पॉइंट की हमने वैल्यूज डाल दी उसके अंदर, सिंस द मिड पॉइंट जो होगा L2 के अंदर भी मिड पॉइंट सेम ही होगा। और जहां तक हम लोग बात करेंगे m की इस केस में, तो इसमें जो m होगा वो हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ऑफ द लाइन P1 एंड P2, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब जो है हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स पास्ट पेपर्स। अच्छा, मैंने पास्ट पेपर क्वेश्चंस काफी सारे रखे हुए हैं लेकिन हम लोग सारे के सारे तो ऑब्वियसली मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो मैं बाकी सारे क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगा और इनकी मार्क स्कीम भी है वो भी मैं जो हूँ फेसबुक के इवेंट पेज के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मुर्तजा, आर यू हियर? यस सर। ठीक है, तो वहाँ पे पास पेपर क्वेश्चंस भी अपलोड मैं कर दूंगा और साथ ही साथ में ये भी मार्किंग स्कीम भी इसके अपलोड कर दूंगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा और पढ़ा सकूंगा, इनइक्वालिटीज़ को भी कवर कर सकूंगा, लेकिन सिंस हमने अभी तक इनइक्वालिटीज़ को कवर नहीं किया तो उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। और उसको अवॉइड करते हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसके साथ साथ एक फंक्शंस के भी कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको भी हम लोग अवॉइड करेंगे फॉर नाउ, ठीक। तो अब इधर हम लोग बात करते हैं, द लाइन 2y is equals to x is drawn on the grid. On the grid, draw the graph of y is equals to 2. तो y is equals to 2 की जो लाइन होगी वो हमारे पास कुछ यूं चली जाएगी। आई गेस ये कलर दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा डार्कर कलर उठा लेता हूँ। इट वुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट 2। ये भी नहीं दिख रहा कलर इतना, लेट्स सी, रेड कलर शायद दिख जाए। ओके, आई थिंक ये वाला कलर जरा आराम से दिख रहा है तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। बता देना अगर ये कलर सही नहीं दिख यस रहा सर। तो हम लोग दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो एक जो पहले वाले हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी दैट वुड बी क्रॉसिंग 2। देन दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4। y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू x एक्स नहीं। माइनस 4, ठीक है। y इज इक्वल्स टू x माइनस 4, इसका मतलब क्या है कि दिस लाइन वुड बी क्रॉसिंग दिस पॉइंट, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मैं दूसरी जो चीज कर सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ कि y would be equal to 0 when x is equals to 4। x के अंदर मैंने 4 डाला तो y is equals to 0 हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो होगा मैं ये वाला पॉइंट बना सकता हूँ दूसरा,
ऐसा ही है। सिंस मैंने 2 पॉइंट्स बना दिए, तो अब मैं जो हूं सिंपली हाँ ओके, मैं समझा देता हूँ। ओके, मैंने इक्वेशन भी थोड़ी सी गलत लिख दी थी तो सॉरी अबाउट दैट टू। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 4 - x। ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं 4 - x लिख सकता हूँ, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू -x + 4। ठीक है। इन दिस केस +4 वुड बी आर y इंटरसेप्ट, सो y इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन इसका ग्रेडियंट क्या होगा हमारे पास, -x। अब एक चीज याद रखना, जब भी पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा तो हमारे पास लाइन इस तरीके से जाएगी, जब भी नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो लाइन हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप होगी। ठीक है। तो आई कैन सी दैट दिस वुड बी अ डाउनवर्ड स्लोप। तो तो इस, नेगेटिव है। तो मतलब नेगेटिव है। ठीक है। अब इसका जो है एक और चीज, अभी तक मैंने क्या कहते हैं, एक पॉइंट मुझे इसका पता है, वाई इंटरसेप्ट जो है वो पूरा पॉइंट होता है जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू हम लोग 0 डालते हैं तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ जाते हैं। तो वाई इज इक्वल्स टू 0 + 4 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू 4 जो है वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया। इन द केस एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 0 + 4, वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए ना हमारे 2 पॉइंट्स चाहिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। दूसरा पॉइंट जो है ना, अपनी आसानी के लिए मैं ये कह देता हूँ कि मैं y को 0 रख देता हूँ। तो फॉर द केस ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, आई कैन हैव 0 इज इक्वल्स टू -x + 4। -x को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, x इज इक्वल्स टू 4 इज द सेकंड पॉइंट हमारे पास। लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, इसका ग्रेडियंट कुछ और है, और अभी जो हम लोग लाइन बना रहे हैं ना उसका ग्रेडियंट कुछ और होगा। इस वाली लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इस वाली लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। ठीक है। ये जो लाइन है अगर हम लोग देखें, ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन जो है ये हमें गिवन है, और जो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है वो है 2y इज इक्वल्स टू x। ओके। अच्छा ये भी देखना, इसमें हमारे पास c इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है, कोई हमारे पास कांस्टेंट नहीं है इस इक्वेशन में। तो इन दिस केस c की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई है। ठीक है। ओके। अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है उसके लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। एक कोऑर्डिनेट वो जो था वो था 0, 4 था। दूसरा वाला हमारे पास क्या आ गया, 4, 0। 4, 0 ये आ गया। नेक्स्ट हम लोग स्केल से अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास स्केल से इसकी लाइन आ गई। ठीक है। ये हमने ग्राफ के ऊपर दोनों लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ओके। ओके। अच्छा ये क्वेश्चंस जो है ना, जो मैंने पास पेपर के क्वेश्चंस उठाए, ये मैंने 2021 और 2022 के पास पेपर के क्वेश्चंस में से जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे वो मैंने उठाए हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। इधर उन्होंने बात की है PQR is an isosceles triangle with PR is equals to QR। अच्छा ये जो है वेक्टर्स के साथ वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी हम लोग स्किप कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, वैल्यूज खुद से भी पुट करके निकाल सकते हैं। मैंने तो y इज इक्वल टू 0 इसलिए कर दिया था कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, किसी किस्म की डिफिकल्टी मुझे पेश नहीं आएगी। लेट्स से कि मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पॉइंट, ठीक है ना, मैं इधर डाल देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास क्या था, y इज इक्वल टू -x + 4 था ना। तो मैं अगर लेट्स से डाल देता हूँ फॉर
x इज इक्वल टू 2 डाल देता हूँ मैं, सही है। तो y वुड बी इक्वल टू -2 प्लस 4 एंड y वुड बी इक्वल टू -2 प्लस 4, y वुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 हो गया, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर मैंने इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से लाइन खींच लेनी थी, आंसर सेम ही आ जाना था मेरे पास। अच्छा, इसमें वेक्टर्स की बात हुई है, वेक्टर्स को मैं अभी अवॉइड कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे वेक्टर्स जो होते हैं मोर और लेस, जब हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स की, तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व किए जा सकते हैं। द रीजन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पहले करवाने का इसलिए क्या था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही इनइक्वालिटीज को भी कवर कर लेती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर्स को भी कवर कर लेती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फंक्शंस को भी हमारे कवर कर लेती है। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट सेशन आई वुड मोस्ट प्रोबेबली गो टुवर्ड्स फंक्शंस या फिर इनइक्वालिटीज या फिर क्या कहते हैं वेक्टर्स, और हो सकता है इन तीनों को ही मैं कवर करवा दूँ नेक्स्ट सेशन जो मैंने रखना है। और उसकी डिटेल्स जो होगी ना मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी, तो उधर से आप लोग अपडेट्स ले सकते हो। अच्छा, बिल्कुल। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, A is a point this, B is a point this. Find the equation of the line perpendicular to AB which passes through the midpoint of AB. किस चीज की बात हो रही है ये मुझे जरा बताना भैया। बाइसेक्टर बाइसेक्टर अच्छा फैजा, किस चीज की बात हो रही है? सर बाइसेक्टर Find the equation of the line perpendicular to AB which passes through midpoint of AB. ठीक है, चैट में मुझे लिख के दोनों बताना किस चीज की बात हो रही है। मतलब चैट में। ओके। फैजा, अच्छा ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहते क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, which is equation of the line which is perpendicular and with the coordinates of its midpoints। ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं फैजा? बताऊं, मैंने चैट पे लिखा है। हाँ मुझे पता है, मैं फैजा से भी पूछना चाह रहा हूँ ना। ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई लाइन हमारे पास मिड पॉइंट से गुजर रही है तो उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्टर, कि इट बाइसेक्ट्स, या फिर इट जो लाइन है उसको हमने दो पार्ट्स में, रादर बाय पार्ट्स में, बाय का मतलब ही टू होता है, तो बाइसेक्ट कर दिया है कि बिल्कुल बीच में से हमने काट दिया कि दो उसके इक्वल हिस्से हो चुके हैं उस लाइन के। ठीक है, तो इट इज अ बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर है, सिंस परपेंडिकुलर की बात होगी। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स एक्स माइनस, टू टू माइनस एक्स वन और फिर प्लस फाइव आगे। इक्वेशन जो है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन और प्लस वाई वन, ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन। नेक्स्ट जो है, अब हमें चाहिए क्या होगा इसमें, हमारे पास हमें ग्रेडियंट चाहिए परपेंडिकुलर का। ठीक है, परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट निकालने के लिए हम लोग पहले ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे। तो m ऑफ ए बी would be equal to y2 minus y1, 3 एक्स minus 5 upon x2, which would be 3 minus x1, so it would be 3 minus 1. This would be equal to 8 over 4, which is equals to 2. ठीक है, m of ab हो गया। m of perpendicular क्या हो जाएगा? m of perpendicular would be equal to negative reciprocal of it, so it would be negative 1 by 2। अपॉन टू
-1/2 परपेंडिकुलर का हमारे पास ग्रेडियंट हो गया। ये हमारे पास अब ग्रेडियंट आ चुका है। अब हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला था? मिड सर पॉइंट ब्रैकेट y2 माइनस y1 और फिर प्लस x2 माइनस x1 नहीं कॉमा x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। ठीक है, हमारे पास मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला था। अब इसमें हम लोग x1 और x2 की वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, -1 और 3 आ जाएगा, तो -1 प्लस 3 ओवर 2 कॉमा y2 की वैल्यूज जो है हमारे पास y1 की वैल्यूज पहले हम लोग -5 डाल देते हैं, प्लस 3 ओवर 2, so this would be equal to 2 over 2 कॉमा -2 over 2। तो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास 1 कॉमा -1। ओके, ओके तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं 1 कॉमा -1। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यूज करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, और साथ में इस वाले ग्रेडियंट को हम लोग यूज करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर अगर ये चीजें मैं डाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू m, y इज इक्वल्स टू m जो है मेरे पास क्या आ गया, -1/2 x minus x1 which would be 1 plus -1. So it would be y is equals to -1/2 plus 1/2 minus 1, y is equals to -1/2 x, oh sorry इधर एक x था, -1/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, ओके अब मैं मार्किंग स्कीम भी अगर साथ में खोलने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं खोल सकूँ। क्यों, उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, इन दिस केस आंसर यही था हमारा। ठीक है, मार्किंग स्कीम मैं साथ में सेंड कर दूंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा, तो हम लोग वहां पे इसको देख लेंगे। जरूरी नहीं है हम लोग इस फॉर्म में दे दें या फिर हम लोग इसको रैशनलाइज करके रैशनलाइज्ड फॉर्म में दे दें, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जो रैशनलाइज्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, वो हम लोग y इज इक्वल्स टू -1/2 x प्लस 1 हो जाएगा। इट डजेंट मैटर, आंसर हमारे पास सेम ही आ रहा है, तो किसी भी फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कोई क्वेश्चन। हम लोग एक और क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ए भी ये है। ठीक है, मिड पॉइंट हमें निकालने का क्या है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, विदाउट एनी इशू हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन का क्या लगता है कितने मार्क्स होंगे? 4 5 मार्क्स थे। रोज का ठीक है, तो वर्किंग अगर ज्यादा है ना तो मार्क्स भी ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास मिड पॉइंट के लिए 1 मार्क है, और फिर 3 मार्क्स हमें कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी जो है वो इसके बराबर है, हमने शो करने हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे लाइन ए बी का। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन बतानी है, तो वो आएगी y इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 प्लस y1, इस तरीके से हमारी इक्वेशन आएगी। तो इसके लिए हमें ग्रेडियंट m चाहिए, बाकी x1 और x2 के लिए हम लोग कोई सा भी पॉइंट यूज कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो m ऑफ a b would be equal to y2 5
minus 3 upon 4 minus minus 2. Okay. So it would become 2 over 6 which is equals to 1 over 3. तो हम लोग अब लिख लेते हैं y is equals to 1 over 3 x minus, मैं ये वाला पॉइंट यूज कर रादर मैं ये वाला पॉइंट यूज कर लेता हूँ ताकि साइंस का इशू ना हो मुझे. -4 plus 5 y is equals to x -4 by 3 plus 5. अब मुझे इस फॉर्म में शो करना है, ठीक है ना. तो मुझे 3 यहाँ पे चाहिए. अगर मुझे लेफ्ट साइड पे 3 चाहिए तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. Okay. So it would become 3y is equals to 3x minus 4 by 3 plus 5 into 3. एल्जेब्रिकली हम लोग अगर राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग अगर कोई फॉर्म फैक्ट उसमें फ्रैक्शन में होगी तो हम लोग उस पूरे फ्रैक्शन को अलग से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. और एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस जब भी हो रही होती हैं उनको हम लोग अलग से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. ओके. Okay. तो इन दिस केस व्हाट वी विल गेट इज 3y is equals to, सिंस 3 और 3 कट आउट हो जाएंगे तो x minus 4 plus 15, 5 into 3 is 15, we get 3y is equals to x plus 11. Hence shown. इजीली हमारे पास 3 मार्क्स आ गए. ओके. ओके फायदा समझ में आ गई यहाँ तक सारी चीजें. ओके. अब आखिर में जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, ये जरा मुझे निकाल के ना सेंड कर देना चैट में. मिड पॉइंट वैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में निकाल लिया था तो वो भी निकाल लेना पहले. उसके बाद में आई डोंट थिंक ज्यादा बड़ा इशू होगा निकालना ये.
ओके, मैं देख लेता हूँ इस चीज़ को। एंड व्हाट अबाउट यू मुर्तज़ा? मुर्तज़ा सॉल्व हुआ क्या? मुर्तज़ा, हेलो। ओके, मैं फिर अब ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट का हमारे पास क्या, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए हैं। ये मैंने सॉल्यूशन ऊपर कर दिए। x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अब ग्रेडियंट की, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर वुड बी 1 ओवर द ग्रेडियंट ऑफ दिस, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो दिस वुड बी इक्वल टू -1/1, -1/1/3, 1/3। अब जब ऐसे इधर चले जाते हैं, इसको हम लोग ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या रादर मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि -1 डिवाइडेड बाय -1। इसको लिखने का आसान तरीका आप लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय m ऑफ ए बी, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है। अब ये इस डिवीजन के साइन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन जब से शिफ्ट करते हैं तो इस वैल्यू को हम लोग ऊपर और नीचे कर देते हैं। सो इट बिकम्स -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, मेकिंग -3। ठीक है। अब हमारे पास ग्रेडियंट भी आ चुका है, हमारे पास पॉइंट भी है। अब हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं उसको। हम लोग अब उसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 प्लस y1, y इज इक्वल्स टू -3 x माइनस 1 प्लस 4, y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 3 प्लस 4, y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 7। हमारे पास आंसर जो है मार्क स्कीम में वो भी यही है। ओके। अच्छा, अब्दुल्ला ये बताओ, अब्दुल्ला कहना, सॉरी मुर्तजा, कैन यू हियर मी? मुर्तजा, कैन यू हियर मी? हेलो। ओके, आई गेस मुर्तजा डिस्कनेक्ट हो गया शायद। तो खैर हम लोग फिर आज की क्लास में यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये है कि मैं ये सारी की सारी जो है ये वाला जो पास पेपर हैं, ये मैं सेंड कर देता हूँ। सेंड क्या कर देता हूँ, मैं अपलोड कर देता हूँ, सॉरी, उस पर, फेसबुक के इवेंट पे। और साथ ही साथ में इसकी मार्क्सिंग भी कर देता हूँ अपलोड। रादर वैसे ये है तो पास पेपर क्वेश्चन तो आप लोग पास पेपर से जाके भी देख सकते हैं। बाकी ये कि मुझे एक बता देना कि विच टॉपिक वुड यू लाइक, मैं मुर्तजा से अलग से पूछूंगा फैजा, विच टॉपिक वुड यू लाइक फैजा फॉर द नेक्स्ट सच सेशन, अगर मैं ऐसा कोई नेक्स्ट सेशन रखता हूँ तो। लाइक किस टॉपिक के ऊपर डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि मुर्तजा ने मुझे बोला था उसको सेट्स के अंदर डिफिकल्टी है।
ओके मतलब सेट्स के अंदर अच्छा मुझे ऐसे अगर सारी बता देना टॉपिक्स जिस जिसके अंदर तुम्हें डिफिकल्टी हो रही हो फायदा। ठीक है हाँ ठीक है, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना, मुझे सेंड कर देना। और दूसरी चीज़ ये कि इनइक्वालिटीज़ को ना मैं जल्दी से बस थोड़ा सा अभी टच करके ना कर देता हूँ कि अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनइक्वालिटीज़ पे ना हो सका तो वो अभी से ही पता हो थोड़ा बहुत तुम्हें। ठीक है, तो उसको अगर मैं इनइक्वालिटी से अगर बात की जाए, ठीक है, तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द ग्राफ शेड एंड लेबल द रीजन आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या गिवन है हमारे पास, x being greater than or equal to 0, meaning value of x should be greater than 0। तो जब हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ x being greater than 0, तो इस पूरे ग्राफ में हमें x की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 कहाँ पे मिल रही हैं, ये पूरा का पूरा रीजन क्या हो रहा है हमारे पास, वैल्यूज ऑफ x being ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की है, इन्होंने इन्होंने कहा है y being लेस देन इक्वल टू 2। जब इसकी बात करें तो 2 से नीचे वाली सारी वैल्यूज जो होंगी वो y की वैल्यूज होंगी ऐसी जो कि 2 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने कहा है 2y बीइंग ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 2y बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू x, इसी इनइक्वालिटी को अगर मैं ये लिख सकता हूँ y, ठीक है, x/2। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मुझे ये पता है कि ये जो लाइन ड्रॉन है ऑलरेडी इसकी इक्वेशन ये 2y इज इक्वल टू x। इन्होंने कहा है कि 2y शुड बी ग्रेटर देन x। इस पूरी लाइन के ऊपर 2y की वैल्यू x के बराबर है। अब इस पूरी लाइन से ऊपर जो होगी वो 2y की वैल्यू ग्रेटर देन होगी x से। ओके, तो जब इन्होंने ये बात की है 2y बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है, इस पूरी रीजन पे y की वो वैल्यूज हैं जो कि x से ग्रेटर हैं, लाइन के ऊपर वो वैल्यूज हैं जो कि x के बराबर हैं। ठीक है, एंड देन फॉर द लास्ट पार्ट, ठीक है, हम लोगों ने इसकी इक्वेशन ड्रॉ की थी, ये वाली जो ड्रॉन है इक्वेशन ऑलरेडी, इस इक्वेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है और इसमें इन्होंने कहा है शुड बी लेस देन, इस पूरी लाइन के ऊपर इक्वल टू 4 है, इक्वल टू 4 है, हमें अब क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। तो इस पूरी लाइन से नीचे नीचे की सारी बात जो होगी वो सारी क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब अब इन्होंने, क्योंकि अब हम लोगों के पास ये आ चुकी है चार इक्वेशंस, ठीक है, इन चारों इक्वेशंस के हम लोग जो रीजन्स हैं उनको हम लोग कंबाइंड शीट कर देते हैं। ठीक है, मैं कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूँ इस कंबाइंड शेडिंग के लिए। एक्स शुड बी ग्रेटर देन, तो मतलब इससे ज्यादा वाली रीजन, इधर से आगे वाला रीजन सारा का सारा, ये कलर दिखिएगा, इधर से आगे वाला सारा का सारा रीजन। ठीक है, फिर y के लिए हमारे पास लेस देन, तो इधर से नीचे वाला सारा रीजन। ठीक है, 2y बीइंग ग्रेटर देन x, इधर से ऊपर वाला रीजन सारा का सारा इस वाली लाइन से, और फिर उसके बाद लेस देन 4, तो इधर से लेस देन वाला रीजन। ठीक है ना, तो हमारे पास जो हमें कंस्ट्रेंट्स दिख चुके हैं इसके, वो हमें क्या दिखे इस रीजन के, एक ये कंस्ट्रेंट है, एक ये कंस्ट्रेंट है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, हमें जो कंस्ट्रेंट्स दिखे हैं वो एक ये दिखा है कि इसके अंदर अंदर होना चाहिए, इस रीजन के अंदर अंदर होना चाहिए, इसके अंदर अंदर होना चाहिए, और इसके अंदर अंदर होना चाहिए। इन सब के अंदर अंदर वाला कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये मैंने जितनी कम टाइम के अंदर मैं जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है, होपफुली समझ में आ चुका होगा। बाकी इनइक्वालिटीज का टॉपिक,
टाइम मिला तो ज़रूर हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, चलो, दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास, और लेट्स एंड इट हेयर। और नेक्स्ट सेशन में सेट्स हो सकता है हम लोग कवर कर लें, हो सकता है हम लोग वेक्टर्स के एरिया में निकल जाएं, हो सकता है हम लोग फंक्शंस को कवर कर लें, ठीक है। तो अपडेट्स जो होंगी वो फेसबुक पेज पे आ जाएंगी, तो उधर ज़रा एक्टिव रह लेना। और बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर इश्यूज हैं क्या? फायजा? अच्छा, वैसे उसके सॉल्यूशंस में कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैसे सॉल्यूशंस में क्या है, वो एक सीधा सीधा इक्वेशन हम लोगों ने लगा दी, उसके अंदर से हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ गई क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो खैर, ये है कि वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैंने वीडियोस जो हैं फेसबुक पेज के ऊपर भी अपलोड की हुई हैं रिकॉर्ड करके, तो वो भी देख सकती हो। उनके ग्राफ्स की मैंने नहीं की हुई, ठीक है। और उनके ग्राफ्स का जो है वो फंक्शंस के साथ काफ़ी लिंक्ड है, फंक्शंस के साथ साथ उनका होगा। और दूसरा ये कि मुझे ना एक फेवर चाहिए होगा, वो ये कि नेक्स्ट सेशन का जो होगा वो भी मैंने फेसबुक पे अपलोड कर ही देना है। तो अगर हो सके ना तो अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड सर्कल और फ्रेंड्स में हर किसी में क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। उसके बारे में बता देना कि सेशन होता है, फ्री सेशन है, ठीक है, तो आओ ज्वाइन करो। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे ना उतना लाइवली होगा सेशन, और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं समझ में आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट सवाल होता है। अब वो उसका जो डिफरेंट सवाल है, उस सवाल के लिए जो एक्सप्लेनेशन होगी वो डिफरेंट होगी। वो एक्सप्लेनेशन जो होगी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर देती है, ठीक है। तो शेयर कर लेना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी क्लास ग्रुप्स वगैरह में, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो या कुछ और हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि फेसबुक पे ना एक रिव्यू अगर मुझे छोड़ देना कि हाउ डिड आई टीच टुडे, ठीक है ना। वो रिव्यू सेक्शन होगा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, तो वहाँ पे ना एक रिव्यू छोड़ देना कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में कैसा आया, डिफिकल्टी सॉल्व हुई नहीं हुई, किस तरीके का पढ़ाया गया है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट तुम्हें लगती है कि की जा सकती है तो वो भी छोड़ देना, ठीक है। चलो, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन का अपडेट्स जो होंगी वो फेसबुक पेज पे आ जाएंगी। अल्लाह हाफिज।